Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session that we are going to do today, that is how to prepare for data analytics for the upcoming National Pension System Trust Grade A and Grade B examination. So we all know that they have released a notification and we are going to have the examination on the upcoming 25th Feb, and here they have come up with both Grade A and Grade B 2025, and Grade A, that is for assistant manager, and Grade B manager cadre. Now in that, the exam which is going to be conducted there in both phases, kindly understand, for general stream in both phases data analytics is going to be one of the important topics. Okay, so let's get into that on how to prepare for this data analytics for this NPS exam. Now, before getting into the nuances of all this data analytics and the entire topics, what you have to do, what are the important chapters, what is the strategy that you have to follow while doing this टॉपिक डाटा एनालिटिक्स, एक बार हम लोग देख लेंगे कि अभी एड्यूटैप ने एक बहुत ही बढ़िया सा कोर्स लॉन्च किया है related to NPS grade A and grade B for both phase 1 and phase 2, of which currently एक 15 days का starter pack उन्होंने launch किया है, which is completely free. Now ये starter pack क्या है? Now when we talk about the जो मेजर कोर्स है, दैट इज ऑल द सब्जेक्ट्स, तो इसमें आप ये 15 डेज में यू कैन लुक एट द कंटेंट of EduTap related to this course and how they are going to cover the topics. So for example, जनरल स्ट्रीम है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है, डाटा एनालिटिक्स का भी एक पूरा टॉपिक है. सो फ्रॉम एवरी टॉपिक दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द स्टार्टिंग फ्यू चैप्टर्स एंटायर कंटेंट, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द एंटायर कोर्स इज गोइंग टू बी रन, एंड दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से वो कोर्स कवरेज हो रहा है एंड हाउ यू आर गोइंग टू get the benefit out of this course. Everything they are going to provide, and accordingly you can make an informed decision कि आपको पूरा कोर्स खरीदना है कि नहीं. ओके, सो एनपीएस ग्रेड ए और बी दोनों के लिए फ्री 15 डेज स्टार्टर पैकेज है फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस स्टार्टर पैक. इसके लिए आपको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन एड्यूटैप वेबसाइट एंड देन यू कैन गो थ्रू द एंटायर कोर्स. ओके, फ्री फॉर जो 15 डेज का जो स्टार्टर पैक है. ठीक है, so now let's get into the session. So before getting into the strategy, data analytics, let's first understand where exactly this topic comes. See, when we talk about NPS trust examination, अभी हमने देख लिया है कि there are both phase 1 and phase 2. Okay, now in both the phases, like phase 1 में है इनका 90 minutes का composite time है. In that you have to answer 120 questions. Of that 120 questions, they are divided into various topics like quantitative aptitude, reasoning है, English language है, general awareness है, and along with that एक particular subject है. In that डाटा एनालिटिक्स इज अ पार्ट, लाइक कॉमर्स है, उसमें अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट, फाइनेंस, नॉट फाइनेंस, कंपनीज एक्ट, और क्या है, पेंशन सेक्टर, इकोनॉमिक्स, वेरियस टॉपिक्स आर देयर. अंडर दैट डीए इज वन ऑफ द टॉपिक, दैट इज डाटा एनालिटिक्स. एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो मैं बात कर रही हूँ, वेयर अदर टॉपिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. दिस इज ऑफ 25 MCQs में क्वेश्चन है और 25 मार्क्स का है. ओके, और कॉम्पोजिट टाइम तो मैंने बता दिया है. सो दिस इज फॉर फेज 1. एंड यस, फेज 2 में भी ये जनरलिस्ट पोस्ट के लिए है. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है फेज 2 का, जिसमें अगेन जनरलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स आपको पेपर 1 में दिखेगा. ओके, पेपर 1 में होगा. व्हेन इट कम्स टू फेज 2, दिस विल फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट इट विल बी अपियरिंग इन पेपर 2. सेम टॉपिक्स, वही कॉमर्स, पेंशन सेक्टर, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड ऑल दैट, इंक्लूडिंग डाटा एनालिटिक्स. एंड यहाँ पे हमारा है 100 मार्क्स का पेपर है ये, एंड यू विल बी गिवन 40 मिनट्स. ओके, सो फेज 1 में पेपर 1 में आएगा आपको, फेज 2 में पेपर 2 में आएगा, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर जनरलिस्ट पोस्ट ओनली. ओके, सो ये हो गया हमारा डाटा एनालिटिक्स एग्जैक्टली आता कहाँ पे है.
Now we'll look into the syllabus. Next important क्या है हमारा? What is the syllabus, right? So let's have a look at the syllabus. So when we talk about data analytics as such, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है syllabus इन्होंने ये include किया है data analytics overview, importance of data analytics, types of data analytics, descriptive analytics, diagnostic analytics, productive analytics, prescriptive analytics, benefits of data analytics, data visualization for decision making, data types. This is actually the syllabus, entire syllabus that you have to cover under the topic or the subject data analytics. ठीक है, बहुत बेसिक है. जो उन्होंने सब टॉपिक्स भी सिलेक्ट किया है वो भी बेसिक है, नॉट मच. नाउ लेट्स गेट इनटू द स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हमें इसका कवरेज करना है. सबसे पहले हमारा आता है ना, इट इज मोर ऑफ ए कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरिटिकल सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हमें पढ़ना है. यस, देर आर फ्यू टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू हैव टू नो, बट उसके अंदर जो इन डेप्थ वाला जो स्टैटिस्टिकल या कंप्यूटेशनल पार्ट है दैट इज नॉट देयर, क्योंकि बहुत आप यहाँ सिलेबस ही देख सकते हो दैट दे हैव मेंशन. Okay, so it is more of a conceptual and theoretical subject, like types of databases, सॉरी टाइप्स ऑफ, यस, डाटास भी है, टाइप्स ऑफ डाटा भी है, टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स भी है. सो हियर यू कैन गेट ईदर डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किस तरह से है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या फिर कितने तरह के डाटा एनालिटिक्स है, उस तरह के आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. और यू माइट बी गिवन नो अ सिनेरियो कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इस पर्टिकुलर टाइप का डाटा है और इस ये पर्टिकुलर सेक्टर है, विच काइंड ऑफ एनालिटिक्स और विच काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन शुड बी डन. उस तरह से अप्लाइड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ऑल अगेन अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरिटिकल बेसिस ओनली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमें देखना है, क्योंकि अब देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट डाटा एनालिटिक्स बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट है. If you want to do एक if you want to do PhD also you can do data visualization में ही भी आप एक PhD टाइप का कर सकते हो. मतलब इतना वास्ट है. So how you are going to cover, how you have to cover in fact. So it is width that is more important than depth. जैसे कि प्रेडिक्टिव यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स है, रादर दैन गेटिंग इनटू नो बहुत ही इन डेप्थ कि डाटा एनालिटिक्स उसमें टूल्स क्या है, उस टूल्स का कोडिंग क्या है, या फिर वो टेक्निक्स क्या है, उस टेक्निक्स के अंदर क्या स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस वो सब हमें करना है. नो, बेसिकली एग्जैक्टली क्या है, कितने तरह के टूल्स है, कितने तरह के टेक्निक्स है, और किस किस सेक्टर्स में वो एप्लीकेबल होगा. Okay, how they can be made applicable, that is more important rather than getting into the very much in depth of the subject. Okay, so here again width is more important than depth. Okay, next, practice multiple MCQs. See, when we talk about this data analytics, as I have said, कई सारे बच्चों के लिए तो ये नया ही होगा. सो बेटर वंस यू आर एबल टू ग्रास्प द बेसिक्स एंड द कंटेंट ऑफ दिस डाटा एनालिटिक्स, ओके, यू बेटर प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज पॉसिबल. क्योंकि सब्जेक्ट नया होगा या फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग में है तो थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा अलग सा है. सो डेफिनेटली देयर प्रैक्टिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, कंटेंट सही से पढ़ लीजिए. ओके, आफ्टर दैट आई सजेस्ट यू टू गो फॉर रिवीजन एज वेल. अच्छे से रिवीजन भी कीजिए, एंड वंस एक रिवीजन होने के बाद यू कैन गो फॉर द MCQs, प्रैक्टिस MCQs, एंड अगेन थोड़ा सा गैप देके फिर एक रिवीजन, एंड डायरेक्टली आप मॉक टेस्ट टाइप का अटेंड कर सकते हो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मास्टरिंग all these topics that they have NPS has mentioned as part of the syllabus. Basics है, width देखना है आपको, more of conceptual and theoretical, and then revision बिल्कुल must है since it is something new to many of the students, and practice as many questions, multiple MCQs as possible, both direct questions and applied questions. applied questions पे मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कई बार they can give you a scenario, and क्योंकि as part of the job description also clearly उसमें है कि data analytics का use होता है. so definitely application part, applied questions आने के chances बहुत high है. so do as many MCQs as possible on applied sort of also. ओके, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो डेफिनेटली बहुत इजीली यू कैन मास्टर दिस सब्जेक्ट, एंड बिल्कुल अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो.
सो फ्रेंड कई जगह पे मैंने देखा है कि नो दैट आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर व्हाट बुक्स वी हैव टू look out for when it comes to the preparation for data analytics. As I have said earlier also, ये टॉपिक जो उन्होंने सिलेबस दिया है बेस्ड ऑन दैट इफ यू लुक एट द टॉपिक्स ऑल्सो बेसिक है. ओके सो वो बेसिक्स के लिए आपको अलग से कोई बुक चाहिए, उसको पूरा आप पढ़ना है एंड ऑल दैट्स नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, बट स्टिल since many of the students were asking, so here this is one book, Fundamentals of Data Analytics by दीपांजन कुमार रॉय. ये इनका मुझे बुक बहुत ही ईजी लगा, मतलब बिल्कुल बेसिक्स है एंड दैट ऑल्सो एक्चुअली उतना भी आपके लिए नहीं चाहिए बिकॉज एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड. ओके बहुत ही कम सिलेबस है फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड इसमें स्टार्टिंग में ही आपका ये हो जाएगा, बट स्टिल जॉब में भी आपको कुछ और डाउट्स है या कुछ और चाहिए इंफॉर्मेशन, या इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट, डेफिनेटली दिस बुक वुड बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स आई शुड से. अगर आपको फिर भी इंसिस्ट करते हो कि हमें एक बुक से पढ़ना है, तो डेफिनेटली दिस इज वन सच बुक दैट यू कैन रेफर टू फॉर दिस सिलेबस, फॉर दिस NPS. Okay, so fundamentals of data analytics by दीपांजन कुमार. सो ये आपको अमेजन पे भी मिल रहा है एंड दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर दिस पेपर. नाउ नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स. As you can see, when we talk about the data analytics for this NPS, both grade A and grade B paper, ये one of the easiest I should say, easiest ही है. थोड़ा सा आप फोकस करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स एंड बहुत ही कम टॉपिक्स है. ओके एंड बेसिकली इसमें डाटा एनालिटिक्स ओवरव्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, बेनिफिट्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स आप एक टॉपिक एक चैप्टर के अंदर कर सकते हो कि बिकॉज आर ऑल कोरिलेटेड. ओवरव्यू क्या है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक डाटा एनालिटिक्स का किस तरह से 4 मेजर स्टेप्स में होता है वो, दैट यू कैन कवर इन दैट. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स. ओके ये एक अलग से कर सकते हो, वेयर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. वो एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट वन कैन यूज फॉर दिस एंड हाउ दे कैन बी यूजफुल. और इसका एक ग्रिड भी आता है, किसका कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना वैल्यूएबल है, बेस्ड ऑन दैट वो एक बार देख लेंगे. एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स चैप्टर. ये एक हो गया. आप नेक्स्ट एक कर सकते हो कि डाटा क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा एंड व्हाट इज डाटा. डाटा विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स अंडर द डाटा एनालिटिक्स ओनली. ठीक है, लेकिन सिंस डाटा विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस शुड बहुत एक्सक्लूसिवली कवर करना पड़ेगा. अलॉन्ग विथ डाटा टाइप्स भी करेंगे तो आपको चलेगा, क्योंकि डाटा कलेक्शन एंड ऑल दैट उसको किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो. ओके क्योंकि एनालिस्ट तो करेंगे, बट आफ्टर दैट इट हैज़ टू बी द पॉलिसी मेकर्स हु हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट एनालिसिस, राइट. सो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर. सो ये डाटा कलेक्शन, क्लेंजिंग एंड ऑल दैट बाद में जो विजुअलाइजेशन है वो भी उसी में आप कवर कर सकते हो. सो हियर यू कैन कवर डाटा, डाटा टाइप्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन अंडर वन चैप्टर. उसी में आपको पूरा कवर हो जाएगा. नाउ इन दिस व्हेन यू लुक एट दीज टॉपिक्स एंड द सिलेबस, डाटा एनालिटिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. बिकॉज वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके इफ यू अंडरस्टैंड दैट, अगर एक बार इंपॉर्टेंस आप समझ लोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो एंड व्हाई इट शुड बी अप्लाइड, बेसिकली टू मेक योर वर्क इजी. ओके व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग लॉट्स ऑफ डाटा, बहुत ह्यूज डाटा जब भी हैंडल करना हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल. एंड इसमें कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है दैट कैन बी यूज. अगर स्मॉल बिजनेसेस है, कम डाटा है तो किस तरह के टूल्स यूज कर सकते हो. अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो किस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हो. वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट अगेन विल हेल्प यू इन डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज वेल, कि कौन से डाटा के लिए किस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बट बेसिकली. ओके नेक्स्ट आता है डाटा एनालिटिक्स टाइप्स, अगेन बेस्ड ऑन द बिजनेसेस.
one has to apply this, and ये chronological order में ही आते हैं. Okay, two types of analytics based on the past history and two types of analytics, forecasting etc. Businesses के लिए और data utilization के लिए, तो definitely types would be very very important. नेक्स्ट आता है डाटा एनालिटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाटा इटसेल्फ. कि देखिए, when we talk about data analytics, the entire data analysis करना है, so you have to focus on the data itself. किस तरह से डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, from where you are collecting the data, how you are formatting, that is cleansing the data for based on your objective, right? And after that, how you are going to use that data, what is your basic objective for this data analytics. So for that, to understand basic, actually जो major first step ही है वही data collection है. So for that, data and data types is very very important. And next आता है, as I have said earlier also, data visualization. क्योंकि data तो हम लोग collect कर रहे हैं, but again that has to be presented in an understandable manner, whatever the analysis that has been done by the analyst, and that you are एक picture दे रहे हो आप, you are giving a shape to the analysis, right? So as to know, the policy makers, they have to visualize that, they have to see that on paper. So that all comes under data visualization. Again, one of the most important step under data analytics. When we talk about data analytics, उसमें 4 major steps है. उसमें सबसे important steps यही है, data collection, cleansing and data visualization. एनालिसिस वो सब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड ऑल दैट यू विल बी एबल टू डू दैट. बट ये दोनों स्टेप्स में कुछ भी फॉल्टरिंग होता है तो दैट विल इम्पैक्ट द एंटायर डिसीजन प्रोसेस. पूरा डिसीजन, अगर डिसीजन ही गलत हुआ तो एंटायर सिस्टम कैन कोलैप्स. So one has to be very very careful. So definitely these two would be very very important, and in order to use these two in a very judicial way or in a very good manner, definitely you should have a good understanding of the data analysis types, its importance and the tools and techniques that can be used. Okay, so important chapters, majorly 3 chapters में आप इसको cover कर सकते हो. उन 3 chapters में these would be important. ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सब कुछ तो आ ही गया है इसमें, बट स्टिल अब सिलेबस भी कम है, तो डेफिनेटली दिस इज हाउ यू हैव टू कवर. सो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स अंडर डाटा एनालिटिक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी सो पेशेंटली. आपने यहाँ तक देखा है, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. And अगर आपको कुछ भी doubts and you want to know more about the courses, various courses that EduTap is offering for this NPS grade A and grade B examination, I suggest you to go through the website, or you can write a mail to us, or you can directly call us and understand the courses that are being offered currently and see which one suits you better. So thank you very much once again. All the best.